Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video, and that is English workshop of the lesson The Concert. So let's start. First we are going to solve warming up. First activity, pair up with your partner and ask and answer the following questions. तो नीचे 5 सवाल दिए गए, उसे अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके आपको आंसर देना है. फर्स्ट वन, ए डू यू लाइक म्यूजिक? क्या आपको म्यूजिक पसंद है? आंसर यस, आई लाइक म्यूजिक. बी व्हाट डज ए कॉन्सर्ट मीन? कॉन्सर्ट का मतलब क्या है? आंसर ए कॉन्सर्ट मीन्स a public musical performance in which a number of singers or instrumentalists or both participate. C. Have you ever attended any live concert? क्या आपने कभी लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया है? आंसर Yes, I have attended a fabulous concert and I liked it so much. D. Have you seen a concert on television? क्या आपने कॉन्सर्ट को टेलीविजन पे देखा है? Answer Yes, I have seen many concerts on television. E. Whose concert would you love to attend? आपको किसके कॉन्सर्ट में जाना पसंद होगा? Answer I would love to attend Tushar Lall's musical concert. अगर तुषार लाल कौन है, अगर आप जानना चाहते हो तो उनका एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बहुत बढ़िया वीडियो है, यू कैन सी इट. Second activity, look at the web diagram given below and study the traits of a good concert organizer. तो एक अच्छा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर अगर बनना है तो नीचे कुछ उसकी क्वालिटीज दी गई है, तो उन क्वालिटीज को स्टडी कीजिए. 10 essential qualities of a concert organizer. First, professionalism, जिसे हम व्यावसायिकता कहते हैं. सेकेंड, पेशेंस, उसके पास धीरज होना चाहिए. थर्ड, रिस्पेक्टफुलनेस, सामने वाले को सम्मान देना चाहिए. फोर्थ, एन ओपन माइंड, खुले विचारों वाला चाहिए वो. फिफ्थ, बिग पिक्चर व्यू, एक बहुत बड़ा एम चाहिए दिमाग में. सिक्स्थ, एबिलिटी टू एंट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द राइट पर्सन, उसे सही व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपने की क्षमता चाहिए. सेवेंथ, स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसका जो संवाद है वो मजबूत और प्रभावी चाहिए. 8, डिसिसिवनेस, सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंदर चाहिए. 9, सेल्फ अवेयरनेस, और हमेशा आत्म जागरूक रहना चाहिए. लास्ट है मोटिवेटर, जिसका मतलब प्रेरक. लेट्स मूव टुवर्ड्स मार्जिन क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाई वाज स्मिता एक्साइटेड? स्मिता उत्साहित क्यों हुई थी? आंसर, स्मिता वाज एक्साइटेड बिकॉज शी वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर. It contains special news that she didn't expect. And the news was that Pandit Ravi Shankar's concert was arranged at Shanmukhananda Auditorium the next day. Second, what was the chance of a lifetime for Anant? तो अनंत के लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला चांस वो कौन सा था? आंसर, अनंत was a music lover and was also learning to play sitar. Listening to sitar maestro Pandit Ravi Shankar and attending his concert was the chance of lifetime for Anant. Third, why did Smita become nervous? Smita nervous क्यों हुई? Answer, Smita became nervous because she had been so excited at seeing the announcement in the newspaper about the concert. She had not remembered that her brother was very ill. Fourth, why was everyone from the family trying to keep Anant happy? फैमिली का हर एक सदस्य अनंत को खुश रखने की कोशिश क्यों कर रहा था? आंसर, अनंत हैड कैंसर and the family members knew from the doctors that Anant had not many days to live. They feared to talk about it, so they laughed, smiled, talked and surrounded Anant with whatever made him happy. Fifth, why was Smita not ready to go for the concert? स्मिता कॉन्सर्ट जाने के लिए तैयार क्यों नहीं थी? आंसर, स्मिता was not ready to go for the concert because her brother Anant and she had always done things together like going to school, learning to play sitar and many more. Both were excited by hearing the concert of Pandit Ravi Shankar, but Anant was ill and could not go there.
So without him, she didn't want to go for the concert. 6th, how did Smita enjoy the concert? स्मिता ने कॉन्सर्ट को किस तरह एंजॉय किया? आंसर, Smita was spellbound by the music. As the first notes came over the air, she felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. But every beat of tabla reminded her of Anand's voice. Seventh, what was Smita's plan? Answer, Smita was planning to meet Ravi Shankar personally in the concert and share her feelings about her brother's plight. If possible, she would like to arrange for a home concert for her brother because that was the chance of his life. 8. Why were the neighbors surprised? Neighbors चकित क्यों हुए? Answer, Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha were the great names in music. Such persons came to their apartment block. That was unbelievable to the neighbors, so they were surprised. Let's move towards English workshop. First, who said to whom? किसने किससे कहा? A. We mustn't miss the chance. Anand told her sister Smita and mother. B. This is not the last time they are going to play. Mother told Anand. C. A walk in the park might make him feel better. Aunt Sushila suggested Smita. D. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes? Ustad Allah Rakha asked Pandit Ravi Shankar. Second number activity. Read the following sentences and write which emotions are revealed from these sentences. नीचे 5 sentences दिए गए, उन्हें रीड कीजिए और उन sentences में कौन से feelings आपको नजर आते हैं वो ढूंढिए. A. Pandit Ravi Shankar is playing tomorrow at Shanmukhanand Auditorium. It shows excitement. B. It is the chance of lifetime. It shows joy, excitement. C. Will you come to Aunt Sushila's house and play for him? अगर ये देखी जाए तो ये polite request नजर आ रही है. D. Did you hear him? It shows eagerness, curiosity. E. Is it? It is not possible. It shows surprise, amazement or wonder. Third number activity. Read the text carefully. You will find some words describing a particular speciality of the individual's personalities in the text. Explain the meaning of the following words given in the table with the reference to the particular personality mentioned in the text. तो लेसन में कुछ बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ के नाम आए, लेकिन हर एक पर्सनैलिटी की कुछ ना कुछ खासियत है और साथ में वो खासियत क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करनी है. तो स्पेशलिटी है माइस्ट्रो. ये माइस्ट्रो किसे कहा गया है? पंडित रविशंकर. और इसका एक्सप्लेनेशन है ही वॉज डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. सेकेंड स्पेशलिटी है पंडित. तो ये सेम पर्सनैलिटी है पंडित रविशंकर एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी सेम ही. देन है उस्ताद and the personality is Ustad Allah Rakha. Its explanation, title for an expert who plays tabla. Then last है mustachioed, इसे मूछ वाला इंसान कहते हैं. पर्सनैलिटी तो दी नहीं, नेम अननोन है या फिर एनोनिमस है. और एक्सप्लेनेशन है a person having a large or bushy mustache. Fourth number activity. Describe the condition of Smita when she was going towards the stage. Read the text again and complete the boxes given below
one is done for you. जब स्मिता स्टेज के पास गई तब उसकी कंडीशन क्या थी वो आपको बतानी है, और वो बता के आपको नीचे का जो डायग्राम दिया गया है उसे फिल करना है। और एक आपको करके दिया है, स्मिता's condition, heart was beating loudly, then her knees felt weak, her tongue was dry, and at last she folded her hands and started speaking. Fifth activity, the whole story revolves around Anant. Write a short paragraph on Anant. Take help of the following points to develop the paragraph. इस लेसन में पूरी स्टोरी है वो अनंत के इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो अनंत के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए, जिस पैराग्राफ के लिए आपको नीचे के पॉइंट्स भी इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट, हिज हेल्थ, सेकेंड, डिजीज, थर्ड, अर्ली इंटरेस्ट, फोर्थ, इंटेंस डिजायर और विश, फिफ्थ, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और विश। आंसर, अनंत वॉज ए 15-year-old schoolboy living in Gaganpur village. He was a diamond in his family and school because he was not only the best table tennis player but also the fastest runner in his school. He was learning to play sitar with his sister Smita and had started composing his own tunes that astonished his guru. Then cancer had struck him and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. As he was a music lover, he had a fervent desire to see and hear the maestro, Pandit Ravi Shankar. His physical condition did not permit him to attend the concert, so his sister Smita made a plan. She requested and convinced the great men, Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha, to fulfill her brother's last wish. When they came and sang for him at their aunt's residence, his desire could be fulfilled. Sixth number activity. The story has three important characters, Anant, Smita and Aunt Sushila. Go through the story again and complete the following table that highlights their special traits of character. You can put X mark if that trait is not mentioned in the text. तो इस लेसन में तीन बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स दिखाए गए, एक है अनंत, दूसरी है स्मिता और तीसरे आंट सुशीला। तो स्टोरी को फिर से पढ़िए और इन तीनों में कौन कौन सी क्वालिटीज मिलती है वो आपको नीचे दिए गए टेबल में फिल करनी है, और जहाँ पे आपको ये क्वालिटीज नहीं मिलती वहाँ पे एक्स मार्क लिख दीजिए। तो फर्स्ट है स्मिता। तो स्मिता की स्ट्रेंथ थी, शी वॉज अ ब्रेव इंसोलेंट पर्सन। Her weakness, she was sensible or sensitive. Her dream was her brother would be healthy. उससे मोटिवेशन क्या मिलता है? Love and care of sister. दूसरा है अनंत। तो अनंत की स्ट्रेंथ थी, he was a talented boy. उसकी वीकनेस थी, he was not a healthy person, that means he was unhealthy. उसका ड्रीम था to see and hear पंडित रविशंकर। तो उससे मोटिवेशन क्या मिलता है? ही वॉज डिवोटेड टू म्यूजिक। लास्ट है आंट सुशीला। अगर उनकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो शी वॉज अ ग्रेशियस पर्सन। उनकी वीकनेस तो नहीं दिखाई गई, उनके ड्रीम्स यही थे टू गिव हेल्प एज मच एज शी कैन। तो उनसे मोटिवेशन ये मिलता है, हेल्पफुलनेस। 9 नंबर एक्टिविटी ए, choose the appropriate adverb or adjective form to fill in the gaps. तो नीचे 6 सेंटेंसेस दिए गए, लेकिन 6 सेंटेंसेस में हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब सही से इस्तेमाल करना है। तो याद रखिए, जब किसी इंसान की क्वालिटी दिखानी है तब एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है, और जब एक्शन और एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है तब एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। एंड मोस्टली एडवर्ब्स आर एंडेड विथ ly. First, she spoke in dash dash tone. Answer, excited. Second, Smita accepted the suggestion. Answer, gratefully. Third, they gave him whatever made him happy. Fourth, he ran very fast. तो यहाँ पे ly वर्ड नहीं आता, याद रखिए, क्योंकि
फास्ट ही एज अ एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो फास्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। फिफ्थ, ही वुड बिकम ए डैश डैश सितारिस्ट समडे, तो यहाँ पे आएगा ग्रेट। सिक्स्थ, लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम, आंसर जेंटली। क्वेश्चन नंबर 9b, रीराइट इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो नीचे 4 सेंटेंसेस दिए गए इनडायरेक्ट स्पीच के। वैसे हमने इनडायरेक्ट स्पीच पे अभी कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन जल्द इसके ऊपर एक वीडियो आएगा स्टूडेंट्स। तो अभी तो मैं इसके डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिए और जैसे इनडायरेक्ट का वीडियो आएगा आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी होगा, इसी तरह वो वीडियो बनाया जाएगा। सो फर्स्ट, प्लीज शी बेग्ड हिम, प्लीज कम, आंसर शी बेग्ड ट्वाइस टू कम। सेकेंड, he said, what shall we do, Ustad Sahib? Answer, he asked Ustad Sahib what they would do. Third, her brother said, enjoy yourself. He added, lucky you. Answer, her brother told her to enjoy herself and he exclaimed that she was so lucky. Last, yes, Panditji replied, it is settled then. Tomorrow morning we shall perform for the boy. Answer, Panditji accepted the proposal and replied that it was settled then and the next day morning they would perform for the boy. 11 number activity. Imagine you are the monitor of your class. You are assigned the task to invite a classical singer as chief guest for the annual day program. Write a letter of invitation to a famous classical singer. Take a help of the following points. Write in short about your school, about annual day program, third, interest and love of students for music, and fourth, motivation. So you can check how I have written this letter. कुछ एक्टिविटीज रह गई, वो क्यों रही है उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। So students, here we have done all the important activities of this lesson. I hope you would have understood them well. Thank you so much for watching the whole video and subscribing this channel. Bye.